All right. So in our earlier lectures, we were basically discussing that how can the countries be classified जब हम economic development की बात करते हैं. So we broke it down into four categories, right? So the first one was the low income economies होती हैं. Then you have the lower middle income economies, you have upper middle income economies, and then you have the developed high income economies, right? So this is how the four ways that we distribute countries. ठीक है, then we measured their living standards using GDP per capita. Then we saw HDI, MEW, MPI. MPI recently ऐसे में भी आ चुका है. We've discussed that thoroughly. Then, if we can use the GDP per capita measure as a measure of a good measure of living standard, what are the problems with it? How GDP and living standards can be equated or not? And so we had all these discussions. Now we economic development की terminology में हम will continue our discussion. We're talking about characteristics of countries at different level of development. Normally, what we're going to be doing is we're going to be sort of like low income and middle income economies एक तरफ हो जाती हैं, and then you have the high income economies on one side. And we want to look at those features, those characteristics that we can compare a low middle income economy with a high income economy. All right, so we're going to use some of the characteristics for this. So for your 20-mark essay, then this becomes a relevant thing. So if I make a discussion, like for example, अगर हम population की बात करें, like how population growth and what are the structures. So number one, we know that population is sort of like converts into labor force at one point. ठीक है, so जब भी आप population को measure करते हैं, so there's a big argument that whether the countries, the world population is a lot or not, right? So we have somewhere around 8 billion people in the world. Every 10 to 12 years, another billion is getting added. So if, in the past, the discussion has been that, you know what, the world cannot sustain so many people. Now, this discussion has been, you know, economists and other people have been making this argument when the world population reached the first billion and we said the world cannot sustain, and now we're at 8. And every 12 to 10 to 12 years, it is expected that 1 billion is going to get added, right? The new discussion is that no, the world has enough resources. It's just that the resources are not being equally distributed. So that is why the problem is what it is, right? अब जब हम population growth rate का देखते हैं low और middle income economies, first thing we need to clarify is that they can be we have the birth rate, okay, how many kids being born for every 1,000 people. Then you have the death rate, that how many people dying for every 1,000 people. And then you have obviously the external migration, that people coming into the country and people going out of the country. So for example, they're saying चले जी एक country है उसकी 60 million की population है, ठीक है. The birth rate is that 13 for every 1,000 people, 13 new births are happening yearly, and 5 are dying for every 1,000. So if I want to do the calculation for it, this is how I'll do. So 13 kids are being born, 5 people are dying for every 1,000, and then multiply that with 60 million people. So basically, what we get is, if I do the math, so 13 minus 5, you're left with 8, and then 8 multiplied by whatever is left over, which is 60,000. So that means that every year, 480,000 people are getting added to your population. So next year, your population is going to be 60 million plus 480,000. So that's about like 60,480,000. So that's how we measure. But this one's called the natural increase in the population growth.
Then you have the external migration. External migration के अंदर what you're looking at is whether people coming into the country, that's with I usually notify it as like import. The first two letters signifies like import की बात हो रही है. So people coming into the country is greater than this immigration. So E से मैं export कह लेता हूँ चलो. Or people exiting the country. So E वाला immigration out of the country. So you want to see what is happening. If people coming into the country are greater than people going out of the country, obviously you're going to have a positive impact on your population. ठीक हो गया? So continuing this discussion, फिर हम बात करते हैं the causes of changes. In order to make this discussion, so I'm going to break it down into something. This is something that we used to do in O levels, right? But let's see how that can apply over here because I think my understanding can it can really add value. So basically, हमारी बात ये हो रही है so that for and every country they have to go through some phases. Let's call it. I'll break it down into about four phases. Okay, every country needs to go through the four phases. The first one, the phase one, is when a country is sort of like a least developed economy, least developed country. Now, I think it's politically incorrect to say this. Now we say all countries are developing, but because they all are trying to pursue to increase their economies, they want to improve their economy. So then everyone's developing. Okay. But let's say you have a least developed country, then you have developing country के two phases. Okay. Both of these I will consider as developing. And then in phase four, we'll talk about a developed economy. Okay. So agar, if I was to say in terms of the countries, you could say like Afghanistan would be here. You could have a country like Pakistan over here. Then you can have country like Malaysia over here. And then you can have like USA over here. ठीक है. So in our discussion in a bit, what we're also going to see is कि होता क्या है that from the birth rate point of view, for a least developed economy, their birth rate is really high. Okay, the birth rate is really high, and then when you enter phase two, the birth rate is high, but then eventually it starts to find a downward trend when it's developing goes like this. And then once it becomes developing, they sort of say it becomes fluctuating like this. The birth rate becomes fluctuating. Now, obviously, there are reasons for this. A very least developed economies के अंदर usually the birth rate is really high. And there could be many reasons associated with it. Like, for example, a family might think that, you need a lot of kids to support the parents at the old age. There is lack of availability of birth controls, right? The cost of raising children is less, and there is lack of education for women. There's high mortality. That means kids are dying at very early age. So, you need to have a lot of kids, and some of them will survive, who will sustain the economy or the family, sorry. तो ये कुछ अच्छे काफी अच्छे reasons हैं. I think make sure that you know these reasons that why developing least developed economies or really like low developed economies have high birth rate. ठीक है. अब जब death rate की बात आती है, so for these countries the death rate is fluctuating, but it's on a very high side. Okay, because of the war and the famine and the problems like these basic healthcare related care, malaria ho gaya, a lot of people die because of that. Typhoid ho gaya, a lot of people die because of that.
But when you enter like second phase, what happens is that the death rate starts to fall down very significantly. There is a reason for that to happen, right? Because ये जो basic थी आपकी malaria, typhoid type के problems है, you sort of like you have those vaccinations and decent medicines that you can deal with these problems and you can maintain, right? And then in the end, the people are mainly dying because of the major diseases like cancer and stuff, right? बाकी आपके दूसरे related, you've sorted them out. अब if you notice, like for a country like Afghanistan, high birth rate, high death rate, so population growth rate is not going to be that significant, okay? But for countries like Pakistan and Malaysia, the birth rate and the death rate has a very big gap between them, and eventually it starts to come down uh, because of the better improvement in education. Women are getting educated, marriages are happening late, they have good birth controls, So all of these people want are career oriented. So all of these factor in. And so in the end, once the country becomes developed, their birth rate and the death rates are already on the very low side. So the economies are not growing so much, right? So on the left, that is what is being discussed. So make sure that you make your argument like this. It's a continuation then on the next page. Um, right, so we're talking about the similar ideas over here. Okay. So for example, over here, the high birth rate of the countries with low development results in a relatively low average ages because when you have really high population, if you remember the population pyramids, let me remind you of those population pyramids once again, which you've done in the O level. For like countries which are developing, what we have observed for developing economies that when we have like in our population pyramid, you have male and you have female ka distraction, and then you have the age breakdowns, like let's say 16 and this is 65 age ka gap. What happens in developing economies is that this is how the population pyramid sort of looks like. What does that show? That you have a really high population in below the age of 16, you have relatively less people in the working age, which is 16 to 65. But when you talk about the developed economies, what happens is uh, same breakdown with male and female. What happens is कि आपका 16 to 65 के अंदर बहुत ही बड़ा रेंज जो है वो 16 to 65 के बीच के अंदर होता है. And then because the birth rates are falling and the death rates are falling, you have an aging population का problem that you can expect, right? So this is what we can see in our diagram. Um, Let me just move this up a little. Yeah. So people in the age of 16 to 65, over here developed Kender, you have a very high people working age population and falling birth rates and falling death rates. So you have a lot of people above 65, very few people below 16, right? So comparatively, जब हम proportion निकालते हैं, so this is where we see that developing has a lot more what you call is a dependency ratio. They have a high dependency ratio because they have few people over here and a lot of kids, right? Um, but once the economy becomes developed, तो फिर आपके पास बहुत बड़ी working age population होती है, so you're not facing that sort of a problem. ठीक है. So obviously, as the income goes up, यहाँ पे लिखा हुआ है, as income goes up, the education and healthcare it starts to improve, the death rate becomes low, the birth rate also falls, एंड तो उसकी वजह से फिर आपके पास जो डिफरेंट प्रॉब्लम आती है वो एक एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आता है एंड देन यू हैव टू पे दीज पीपल पेंशंस एंड अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट that happens and then you might have to increase the retirement age or you might have to tax a lot on the working age population.
ठीक हो गया. So that is one of our discussion that we make. फिर उसके बाद we want to talk about a little about the optimum population का discussion. This was also done in O levels. Idea was that every country has an optimum population based on the resources the country has. Some have a lot of capital, some have a lot of labor, some have a lot of natural factors. Okay. So, what is the optimum population for a country? It's not just geographical constraint, right? Like for example, you could say that Japan has very less land span, right? And the population is top 10, I think number 9 or number 10 के ऊपर उनकी population है in the world. So for such a small economy, having such a large population means that the country cannot really sustain. Maybe, maybe not. And then you have China, which is the world's largest population, but based on the land mass, they still have a humongous amount of lands available, which can sustain their population, right? तो हम इस तरह से बात करते हैं that if you notice this diagram, the optimum population का, you have population size on the x-axis and you have income per head. What it shows is that when a country's population obviously is zero, so there is zero output per head, but जैसे जैसे country का population size improve होता है, so what happens is now the country can make the better use of the factors of production that they have, like land and capital. So when the population is growing, the income per head actually goes up until a population P1, let's say. You've reached an optimum population. After that, if you try to increase your population, what happens is that the GDP per head starts to fall down because now you have less resources per person. तो ये वाला जो पॉइंट है बिफोर P1 यू कुड से जब आप इनकम पॉपुलेशन साइज ग्रो होता है एंड इनकम पर हेड राइजेस so we say the country is actually underpopulated right now. That's why increasing population actually increases the income per head. But then, once the income per head starts to fall down as the population is increasing, we can say that the country is overpopulated now. That's why there's a fall that is happening. So you could say that this is the point of optimum population, P1. But we have to remember that it is not so static like this. There's always, technical knowledge is always increasing. And when you increase the machines and stuff and technical expertise, what happens is that your curve actually jumps up and turns out that because of that, now you can sustain at P2, a higher population can sustain and be an optimum population, right? This is what the people back in the day during Marxist ideas and Thomas Malthus के concept के अंदर, this is something that we did not consider. हमने सिर्फ ये देखा कि जमीन है, लेबर है. जमीन इतना आउटपुट बना सकती है, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रो होती जाएगी तो फिर इतना लैंड की प्रोडक्शन इज नॉट गोइंग टू सस्टेन एंड सो वी विल हैव अ प्रॉब्लम. बट ऑब्वियसली दीज पीपल डिड नॉट फैक्टर इन के टेक्नोलॉजी की वजह से you can actually increase the yield of the agricultural land, and so you can have a higher optimum population also. Understood? फिर हम और मजीद बात करते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर व्हाट अदर थिंग्स इज पॉसिबल दैट वी माइट यू नो कैन एक्सपेक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से. अब वी नो दैट लो income economies usually has a high proportion of people living in the rural areas. Okay. And developed economy tends to have a high percentage of people already people living in the urban areas, right? But what we also see is a rising immigration, yeah, migration from the rural to the urban. And we've seen that happening in Karachi and Pakistan, that when major flood comes in, people realize that their land is underwater and now they cannot sustain life over there. So they start moving towards the main cities. It's a very common thing. But unfortunately, what it does is that it puts pressure on the infrastructure, housing, and the schools. A good thing might be out of this because of the rising demand. It is possible now, more available labor means
that at least low skilled labor can increase in your economy. But usually, these rural income wale जो लोग होते हैं, वो unskilled होते हैं, so they can add to the low skilled income and they can put a downward pressure on income. So for companies, it can be a possible thing. बट हमने ये भी देखा है हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर where there is a high urban area population, which unfortunately the problem they face is that the living is very expensive because of this um, in the urban areas and too much pollution. So they want to move away from the urban areas and move towards the rural side or the countryside, because of the clean air and better living standards and all. And this is only possible because of technologies, as we've seen that work from home has increased significantly since 2020, early 2020. So that has really improved and allowed people to move. ठीक है जी. फिर उसके बाद we also want to have a little discussion on um, the income distribution. Okay, now this is something that you've done in AS and O levels plenty of times, and we're going to use the Gini coefficient one more time, so we can use this as a reminder. अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आवर डिस्कशन इज दैट लो इनकम कंट्रीज टेंड टू हैव अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नाउ जस्ट इमेजिन लाइक फॉर एग्जांपल लो इनकम इकोनॉमीज के अंदर जो खास तौर पे पहले जब कमांड इकोनॉमीज होती थी, जब हम सोवियत यूनियन एरा में थे बिफोर द 1980s, countries like Poland did not exist, but Eastern European countries जो थी वो सब centrally planned थी. फिर after the Afghan war and when the Soviet Union broke and the countries got independent like Ukraine and Poland and Romania and Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, all these economies, basically the first time when they moved from a command to a market economy, it was observed that inequality actually increased at first. And the reason was that when the new opportunity came, there were a few who benefited from this entire transition, right? But हमने देखा है कि स्लोवेनिया एंड यूक्रेन के अंदर relatively less uneven थी distribution. Over there, they saw much better distribution of income. There could be various reasons for that. But all we're discussing over here is that low income economies usually tend to have uneven distribution because haves benefit more than the have not. And once the countries become developed, then the equality is much more better. उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व का आइडिया यूज किया था. Just to remind you, Gini coefficient, we said we calculated a value which was between 0 to 1. Zero meant, and this is mentioned on the next page, zero meant a perfect equality. Okay, now no country exists on this side. And one would mean that perfect inequality. That means one person has all the wealth in an economy. Okay? लॉरेंस कर्व को यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से. सो इफ आई लुक एट माय डायग्राम बिलो, इस डायग्राम में हम क्या शो करते हैं कि on the x-axis, you have the cumulative percentage of the population from 0% population to 100%. And then over here, we have the percentage of country's income that has been earned. You have this line flashing half. So ये जो पूरा area है, that's about 50%, right? Of the entire area is the 50%. A and B makes the 50%. Equality की line क्या show कर रही है? So if just to explain you, that if I break like population into 50%, and if I say this is the 50% population, 50% population basically has 50% of the country's income. That would mean, equality. So ये जो line है over here, that is showing 25% gets 25, 75% gets 75.
10% gets 10%, right? This is line of equality. This is the line we use to compare. असल में क्या होता है? So Lorentz curve shows that, like, for example, just imagine this country. What this country is showing is that 50% of the country has just below like 25% of the country's wealth. That shows inequality, right? So 10% of the population should have 10% of the income, but this is showing that 10% of the population has, near 5% of the country's wealth. That shows inequality. So area A over here shows that this shows inequality. Okay, the gap between equality versus how the country really is. So the equation is area A, which shows inequality, divided by the 50%, which is A plus B. तो एरिया ए जितना बड़ा होगा, ये कर्व में उतना ज्यादा इतना बड़ा गैप आ जाएगा. यू फॉलो? So this shows high inequality. So if you get a high index, right, like near 1, that means that you have high inequality. You follow? And if your value is like near 0, that means you have low inequality, right? So this is how we make the discussion. So on the next page over here, we sort of like have this discussion being further made and with the examples. But this is how we look at it. Also remember that not all the time they're going to give you number in 0 to 1. That's called an coefficient. Okay, Gini coefficient is from 0 to 1. Idea is the same. 0 means good, 1 means bad. Sometimes they might convert this into an index. So when they do it in terms of index, the value will be out of 100. Okay. So it's just simply like, for example, Argentina का coefficient is 0.41. तो अगर मैं उसको index में निकाल दूं, so the value would be like 41. So the nearer you are to 100, the worse it is. And the nearer you are to 0, the better it is. Same idea, but हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर सकते हैं फॉर लो इनकम मिडिल इनकम वर्सेस ए हाई इनकम इकोनॉमी. ओके. फिर उसके बाद हमारे पास और मजीद जो डिस्कशन आता है वो, इफ यू सी ओवर हियर, sorry, let me just zoom out a little. Okay, so employment, how employment works at different stages in an economy. तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर. आई थिंक यू वेल वर्स इन द आइडिया कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादातर जो है चीप एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की बात हो रही होती है. सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो इसमें थोड़ा सा बेटर इनकम्स अर्न और थोड़ा स्किल लेवल यूज होता है. एंड देन यू हैव द टर्शरी, जिसके अंदर आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, इन सब की बात कर सकते हो. The main discussion that happens is when a country is transitioning from a developing economy to a developed economy, what is happening? So normally what we see is that there's a movement from primary to secondary and then secondary to tertiary. There is a possibility that countries might jump from primary to not so much in secondary, but a lot into tertiary. Tourism, maybe we can observe something like that happening, right? जैसे हुंजा के एरिया के अंदर you could see that extraction and agriculture is the main thing, and then now बहुत ज्यादा tourism की वजह से a lot of movement is happening towards the tertiary sector. But generally economies के अंदर primary से secondary की movement ज्यादा होती है, and that is what is being discussed over here. ओके. फिर उसके बाद हम फर्दर अपना डिस्कशन लेके जाते हैं, तो फिर पैटर्न्स ऑफ ट्रेड किस तरीके से अप्लाई होता है फॉर दीज कंट्रीज. तो इन आवर डिस्कशन रिमेंबर, इसमें होता क्या है, आई जस्ट वॉक यू थ्रू इट एंड देन यू कैन डू दिस रीडिंग इन योर ओन टाइम. होता ये है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो बेचारी एक्सप्लॉइट होती हैं.
बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट का एक जो बड़ा परसेंटेज होता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू का, और इनफैक्ट समटाइम्स जीडीपी का भी जो एक बड़ा परसेंटेज होता है वो एक्सपोर्ट पे रिलाई करता है of some sort of like precious metals or something, and then they're highly reliant on those. And unfortunately, जो प्राइमरी इनकम्स के जो गुड्स होते हैं वो अनरिफाइंड होते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान रिको डेक से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करके भेजता है तो हम गोल्ड नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम बहुत सारे व्हाट यू कुड से इज स्टोन्स एंड रॉक्स एंड ओर्स हम करते हैं, और फिर वो यहाँ से शिप में बैठ के अब वो जाएंगे टू द कंट्रीज विच आर एक्सट्रैक्टिंग दीज रिसोर्सेज, और फिर वो वहां जाके उसको रिफाइन करेंगे और उसको गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो अनरिफाइंड मटेरियल जाएगा, द बिग रॉक बोल्डर्स, वो अनरिफाइंड है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी बिकॉज उसमें पता नहीं है कि कितना सोना है कितना कॉपर है, राइट? तो उसमें हमारा टर्म ऑफ ट्रेड भी खराब होता है। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, द टर्म ऑफ ट्रेड इज वेरी बैड। The rich countries tend to exploit us. We're dependent on these countries, but also at the same time, इनकम इनलास्टिक होती है हमारी सिचुएशन। लो इनकम कंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनकम इनलास्टिक होते हैं। व्हाट दैट मींस इज दैट इवन इफ द वर्ल्ड इनकम गोज अप, आवर डिमांड इज नॉट गोइंग टू चेंज बाय सो मच। डू यू फॉलो? तो इसकी वजह से हमें कोई, अगर वर्ल्ड प्रोग्रेस भी करती है और लोग ज्यादा भी कमाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सी अ मेजर इंक्रीज in our incomes as such, right? In our demand for the goods as such. बट जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उसके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर पोटेटोज प्रोड्यूस करते हैं और हम पोटेटो सेल करते हैं और बाहर से चिप्स मंगाते हैं, या हम यहाँ से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से हम फ्यूल, जेट फ्यूल्स वगैरह मंगाते हैं, मोटर ऑयल्स वगैरह मंगाते हैं, राइट? डू यू गेट द आइडिया? अगर हम यहाँ से गोल्ड के लिए बोल्डर एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पैसे और खर्चे ज्यादा होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारा जो पैटर्न है ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ गुड्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, और जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ जनरेशन होती है, वी डोंट टेंड टू सी ए हाई इनकम एज सच। ठीक हो गया? फिर उसके बाद व्हेन वी मूव फर्दर डाउन, वी वांट टू टॉक अबाउट एड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है बाय द वे, सो वी वांट टू हैव अ वेरी गुड एंड इन्फॉर्म्ड डिस्कशन। अब जब हम एड की बात करते हैं तो यूजुअली एड लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज को ही चाहिए होता है, बट ये कंट्रीज थोड़ी सी रिस्की होती हैं। ठीक है, तो जो हाई इनकम इकोनॉमीज होती हैं वो जब हमारी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, so usually it is a costly thing. So they want to charge a high interest on us also. अब जब भी हम एड्स की बात करते हैं तो इट इज अ मस्ट फॉर यू टू डिस्कस इन दी essay that you talk about tied or untied, bilateral versus multilateral। ये होती क्या है? एड, अगर आपको कोई टाई एड मिल रहा है तो दैट मीन्स उसके साथ कुछ कंडीशन हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान कहता है कि हमें डिफेंस के लिए लोन की जरूरत है, so that to protect ourselves against the Taliban or the enemies of the country, we need a weapon. So for that, we need aid. So Americans would be like, okay, fine, we're going to give you aid, but it's tied that you're going to buy these weapons from us, right? So we get the aid. Now we are in debt to the US, and at the same time, we're buying their um, goods. It's actually a win-win situation for them. Now they have loaned, our country owes them, and at the same time, you can see that आपका trade भी ऊपर चला गया. That's fantastic, right? Untied, on the other hand, would be something के
we're giving you the money, but in good faith, there is no conditions involved. You can go and buy stuff from anyone. But usually इसके अंदर भी क्या होता है कि good faith comes into play, and you tend to, buy from the same country just to make sure that we have good relations with those countries, right? फिर आपके पास आ जाता है बायलैटरल वर्सेस मल्टीलैटरल. बायलैटरल का कॉन्सेप्ट ये है कि यू गो डायरेक्टली टू अनदर इकोनॉमी एंड यू get loan from them. Like for example, we go to Saudi Arabia and we tell them, you know what, we need money, so please help us out. It's a bilateral between two countries. Bi means two. But multilateral would be that we go to IMF and we tell them we need aid. So IMF obviously has many creditors who give them the money to invest in several countries and earn some interest. तो मल्टीलैटरल के अंदर जो है आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हो. टू मेजर वंस आर द यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज and the World Bank, and there's a much deeper discussion at the back for this. So you have to have a discussion about these, okay? So it's a much discussion, one, two, three, four things. अगर आप aid की बात करते हैं. Now, reasons for giving aid. Um, Obviously, there are some, okay? Usually हम expect करते हैं कि poorest countries को aid मिलेंगी, but that's not always the case. Sometimes not the poorest might even get, sometimes they might need a little help. या अगर इसके अंदर अगर हम टाइड की बात करें, टाइड बायलैटरल की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो यूएन एजेंसी या वर्ल्ड बैंक है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, व्हाट दे वांट इज दैट ठीक है हम आपको पैसे देते हैं, but we want to make sure that this money is being spent on the things that we're telling you, on the public service, on the education, on the healthcare sector, or the infrastructure. तो इससे क्या होता है कि they realize that we're giving them the loan. It is tied to these things that they have to do. If they don't, we're not going to give them more money. But what this will do is it's going to improve the living standard of these countries, and these countries are going to come out of the poverty. Now, remember, these agencies have 2030 का plan, जिसको ये लोग they call it the Washington uh, program or something. It's gonna come in a bit, but the idea over here is that, we want the countries to excel in these 10 things, that they become self-sufficient and they improve their living standards, so that the countries, I think they want to reduce the poverty level in the country, the extreme poverty level, to down to 3 or 4%. ठीक है. So one of the reason is to give them loan is so that the countries improve themselves, okay, or the countries buy the goods from these donor countries. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास जो फर्दर डिस्कशन आता है इसके अंदर, ओके वन सेकंड प्लीज. या सो उसके बाद जो हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं इसके अंदर, it is about sometimes the countries are giving you loan for political influence, कि अगली यूएन सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर आप हमारी साइड लेंगे. ठीक है, यू लाइक फॉर एग्जांपल रशियन यूक्रेन के वॉर के अंदर जो डिस्कशन है उसके अंदर, देन यू गोइंग टू वोट दैट रशियन इज नॉट डूइंग गुड विद द यूक्रेनियन, राइट? सो यू गोना वोट. सो इस तरह का टाइड के अंदर आपकी बात हो जाती है. Right. So sometimes it can be just simply like humanitarian motive के लिए, that you want to make sure that the countries are helped out because कोई बहुत ही major natural disaster or famine हो गया है, and you want to help these countries out of these negative external shocks that they have sort of gone through. Right. So ये बहुत सारी हमारे पास कुछ चीजें होती हैं. फिर उसके बाद हमारे पास further discussion जाता है इसके अंदर. Over here, the effects and the importance of aid for any economy. So remember, aid के साथ countries क्या करेंगी?
अगर वो कंट्रीज इस एड को इन्वेस्ट कर लेती हैं, बिकॉज रिमेंबर द कंट्रीज usually don't have investment, right? That's their poverty cycle that we've discussed earlier. कि कंट्रीज के पास जब सेविंग्स नहीं होती हैं तो दे आर अनएबल टू इन्वेस्ट, राइट? इवन दो दे हैव द एंटरप्रेन्योर्स बट दे डोंट हैव द फंड। जब इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड टू एजुकेशन और बिजनेसेस की तरफ से हायर प्रोडक्टिविटी, मोर इनकम्स, एंड देन द कंट्रीज टेंड टू हैव मोर savings, and then those savings converts into more investment, and then the cycle may improve is the idea, right? But sometimes we know that countries become highly reliant on these, like for example 40% of Burundi's income is from the aid, and once they become heavily invested in this और वो बहुत ही heavily in debt हो जाते हैं, तो अब unfortunately what happens is that उनकी interest payments इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उन्होंने अभी तक इतना इंटरेस्ट पे कर दिया होता है कि उनका अभी तक लोन्स जो हैं वो जो बोरो करके they've been working spending money, they just in a debt trap, they've been stuck and they can't just come out of this, right? And then you have World Bank and IMF basically telling them what they need to do and how they need to spend, and then you might need to cut down expenditure on investments, or you can't make your electricity cheaper. जो पाकिस्तान का केस है, you can't make electricity cheaper so that your people can actually, don't have to pay so much of the percentage of the income that they're earning towards these goods. And that's obviously a problematic. You sort of like lose control of your spending and your welfare spending, खास तौर के ऊपर, because the government, the IMF is, these external parties are not allowing you, right? So that's definitely a really bad situation. फिर उसके बाद हमारे पास फर्दर डिस्कशन फिर इसके अंदर जाता है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें और क्या डिफरेंसेस होते हैं, लो मिडिल इनकम वर्सेस हाई इनकम के अंदर, व्हाट अदर थिंग्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट टू सी। ऑब्वियसली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में वी सी समथिंग। नाउ ज्यादातर हम ये देखते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ज्यादातर डोमिनेटेड होता है हाई इनकम कंट्रीज के अंदर, और उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड भी स्ट्रांग होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू टेल द प्राइवेट सेक्टर, ओके फाइन, एग्रीकल्चर गुड्स इफ यू या माइनिंग का सस्ता देते हो तो ठीक है, अदरवाइज यू गोना गो टू सम अदर पुअर लो इनकम कंट्री। So then, they get to exert their power over the price. तो टर्म ऑफ ट्रेड फिर खराब होता है, और जो बेचारी लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनको बाहर से जो है प्राइमरी जो भी कंट्रीज से जो गुड्स मंगाते हैं, इंपोर्टेड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो महंगे पड़ते हैं। अब कुछ कंट्रीज होती हैं वो कहती है नहीं, हमें सिर्फ एड नहीं चाहिए, हमको ट्रेड चाहिए ना। दीज आर द स्मार्ट कंट्रीज, ओके। करप्ट कंट्रीज वुड बी लाइक कि हमें बस एड दे दो एंड वी गोना सॉर्ट इट आउट, एंड देन दे गोना मिसयूज द मनी। ओके, वो भी एक प्रॉब्लम है कि कंट्रीज जो है दे डू नॉट इम्प्रूव even if they are getting the aid from Western economies because they're not spending it appropriately. I think पीछे पेज में there might be a discussion on that. तो कंट्रीज माइट से कि हमें ट्रेड चाहिए, जब ट्रेड मिलेगा तो आपको लार्ज मार्केट्स में मिलेगा एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आप एडवांटेज उठाएंगे, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमीज में एंटरप्रेन्योर्स को जब कंपटीशन फील होगा तो वो बेहतर तरीकों से प्रोडक्शन करेंगे। बाहर कंट्री से फिर आपके पास ट्रांसफर ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज होता है, जैसे हमारे पास चाइना का केस है इन द लास्ट 20 years, that how they have excelled and now they're at a level of innovation. First, there was only transfer of skill and technology, and now they are innovating. फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में इनकम्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, और फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। So all around, it would be a good thing. So countries might want to pursue something like that. ठीक है, और फिर हमने उसी बात का फिर डिस्कशन किया है। फिर हम फर्दर फिर डिस्कशन करते हैं कि whereas trade may demand or stimulate demand and economies might grow and that might help us, low income countries have tended to specialize in primary goods. हमने पहले भी बात की है, प्राइमरी गुड्स जो है यूजली इनकम इलास्टिक होती हैं,
तो chances are that you might actually not benefit from this whole thing. ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा, that have specialized in agriculture products have been at a disadvantage in trading relations since the price of agriculture products have declined. अब इसके पीछे डिस्कशन देखो। नंबर वन, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर लो लेवल के ऊपर है। यू प्रोड्यूसिंग इनकम इन इलास्टिक, सो व्हेन द वर्ल्ड इनकम राइजेस you don't see a much rise in the demand for these goods, right? That's what income inelastic means. फिर उसके बाद producers of manufactured goods in high income countries have an element of monopoly power कि मोबाइल फोन खरीदने हैं तो आपने हमसे खरीदने हैं, नेटफ्लिक्स तो हमसे खरीदना है, सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब एंड ऑल, दीज आर ऑल आवर प्रोडक्ट्स, राइट? फिर उसके बाद सब्सिडीज जो है, डेवलप्ड हाई इनकम कंट्रीज जो है बहुत हाई सब्सिडीज भी देते हैं अपने फार्मर्स को, तो उसकी वजह से उनकी प्राइसेस इतनी competitive होती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट रियली compete with these countries, right? So it can be unfair to them. That's what the discussion over here is. फिर उसके बाद फर्दर डिस्कशन फिर हम लेके जाते हैं कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आपके, हो सकता है कि उसमें एक्सप्लॉयटेटिव का मटेरियल हो। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कंट्रीज अपने आप को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग की तरफ लेके जाना चाहती है। लाइक फॉर एग्जांपल वेनेजुएला का केस है कि वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज लगा लें, विच मीन्स के जो गुड्स बाहर से आ रहे थे उसको आप लोकली प्रोड्यूस करें, ताकि उससे आपकी लोकल इकोनॉमी जब डेवलप होगी तो आपका इंपोर्ट का बिल भी कम हो जाएगा, उससे आपका करंट अकाउंट पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, एंड देन यू कैन इवन लाइक एक्सपोर्ट दीज गुड्स अब्रॉड, so that can really like work in the favor as well. ठीक है? फिर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिमेंबर यूजली हमने ये देखा है पास्ट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलप्ड कंट्रीज में मूव होता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए। व्हाई? बिकॉज दीज आर सेफ इकोनॉमीज। बट रिसेंटली व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि बहुत सारा पैसा अब मिडिल और लो इनकम की तरफ जा रहा है, राइट? जिसको आप इमर्जिंग मार्केट्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज कंट्रीज आर लिटिल रिस्की बट इनके ग्रोथ रेट्स आर ऑल्सो, अगर आप नोटिस करें, इंडिया, चाइना का, मलेशिया का ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू यूके, यूएस, द ग्रोथ रेट इज मच मोर। सो एन इन्वेस्टर, a capital investor would be taking the risk and invest in these countries like Saudi Arabia and in Malaysia and all, ताकि रिटर्न ज्यादा हम कमा सकें, राइट? तो इन्वेस्टमेंट्स की जो बात होती है, दिस इज हाउ कि हमारा जो डिस्कशन है कि पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट्स मूव करती थी, बट नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज के कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग की तरफ इन्वेस्टमेंट भी जो है वो मूव करना शुरू हो गई है। Then we have our discussion of multinational. Now, this is all from the past. Remember, so I'll just skim through this. मेन आइडिया इज कि मल्टानेशनल्स होती क्या है? मल्टानेशनल्स वो होती हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, लेकिन उनका हेडक्वार्टर यूजुअली किसी एक डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर ही होता है। ठीक है? मल्टानेशनल्स जो है डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं फॉर सर्टेन एडवांटेजेस, लाइक फॉर एग्जांपल द रॉ मटेरियल, फॉर स्किल्ड लेबर, फॉर टैक्स बेनिफिट्स ऑफ दोज इकोनॉमी, फॉर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, sometimes just to avoid barriers, sometimes transportation cost को बचाने के लिए। तो there are various reasons मल्टानेशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके कंट्रीज में जाती हैं। तो जो होस्ट कंट्रीज होती हैं दे वांट दीज मल्टानेशनल्स टू कम एंड ऑपरेट, बिकॉज नंबर वन, unfortunately these countries, they have deficits in their balance of payment, so they need financial investment to come into the economy. So ये बड़ी कंट्रीज को इनकरेज भी करने की कोशिश करते हैं। They spend a lot of money also, you know that they spend a lot of money to attract these these companies to come in. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हम वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द मनी कमिंग इन टू योर इकोनॉमी to produce certain goods and services. These are not those कि स्टॉक में पैसा आ रहा है, those are portfolio investments, those are different के
फॉरेनर ने आके पाकिस्तान में एंग्रो के शेयर खरीद लिए, राइट? इट्स नॉट दैट केस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज यूजली कि आपकी कंट्री में हम पैसा लेकर आ रहे हैं, we're going to put in factories and we're going to produce goods and services. Okay, it's going to bring in the money. At least right now, in the long run, it might take the money out of the country because primary incomes के अंदर से the money is going to flow out as profits and dividends. But low income in countries, because they don't have a lot of savings, they encourage these countries to come in. Then they offer them like low corporate tax rates, good education system, के लोग पढ़े लिखे हों, समझदार हों, so they gonna have like good education. Rules and regulations will be favoring these multinationals. Sometimes they might even give government subsidies to it. So it's a pretty reasonable discussion. Okay, जी। फिर उसके बाद वी ऑल्सो टॉक अबाउट सिचुएशन के एक्सटर्नल डेट की हम बात करते हैं, ठीक है? सो ऑब्वियसली लो इनकम कंट्रीज के ऊपर एक्सटर्नल डेट भी होता है। एक्सटर्नल डेट क्या होता है कि जब कंट्रीज ने पैसे बोरो किए होते हैं ऑब्वियसली, तो नाउ they have to repay it and they have to repay it with interest. So जब कोई कंट्री ने इंटरेस्ट नहीं पे ऑफ किया होता है या उसके ऊपर accumulated debt होता है, तो we say these countries could be heavily indebted. Okay, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जी what do we mean by this, right? And what are the reasons for a country to be going into debt? एक तो कंट्री के पास जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है and it's a structural one, कि गुड टाइम्स के अंदर भी कंट्रीज बहुत इंपोर्ट्स कर रही होती हैं और बैड टाइम्स में भी इंपोर्ट कर रही होती हैं। तो जब उनके पास इतना ज्यादा इंपोर्ट डेट्स होते हैं, सॉरी इंपोर्ट डेफिसिट होता है, तो उसकी वजह से जो है दे हैव टू बोरो मनी। या ये भी हो सकता है दे हैव अ वेरी हाई आउटफ्लो, प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम्स के आउटफ्लो ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी जो है कंट्री के ऊपर कर्जा होता है। One is that country has borrowed too much money. They were overconfident. We can easily pay it off, but turns out they're unable to. Okay. Third is that the money that they borrowed, they did not invest that money in the right places. Okay. Interest that they have to pay is more than the project return, and turns out that the country is not doing so well in that case. फिर उसके बाद it is quite possible, the fourth reason is कि कुछ अनफोर्सीबल इवेंट हो जाता है, जैसे कोविड आ गया था, and then the country needs to borrow exuberant amount of money and now they face a lot of trouble as a result of that. तो ये भी बड़े मसले की बात है। कोई सप्लाई डिमांड शॉक्स आ जाते हैं, कोई ग्लोबल रिसेशन आ जाता है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप एक्सपोर्ट करके इंटरेस्ट पे ऑफ कर दोगे, बट टर्न्स आउट आपका एक्सपोर्ट हर्ट हो जाता है। आई थिंक वी हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ टर्की, दैट हाउ टर्की टूरिज्म पे डिपेंडेंट है एंड दे कैन इजीली पे ऑफ देयर डेट्स, but problem क्या हुआ कि COVID आ गया, people are not allowed to move between countries and now their entire industry suffers and they go into major debt crisis, right? So वो आपका डिस्कशन हो सकता है। So लो इनकम इकोनॉमीज के लिए यूजुअली जब बहुत ही हाई लेवल ऑफ डेट पे चले जाते हैं, it becomes really really difficult for them to pay off. They might have to talk with these international agencies like IMF, and they can suggest a plan that how you can repay them these sums of money. Um, but sometimes the country might even default. They say that we don't have the money to pay off, and whatever policies you're telling us is really harsh. We cannot afford to do that. We cannot cut spending on education and healthcare. So, you know what, we'll just default as a nation. We don't have the money. Obviously, default itni aaram se you won't be off the hook. The international multilateral lenders will obviously put sanctions on you. You will have difficulty in exporting, and that can affect your local economies and the tax collections and all of that. So, it's not so easy to default as well. So countries, usually low income economies जो होती हैं, वो बहुत high debt पे होती हैं, and then they have a lot of crises of their own as a result.
Then we want to talk about a little bit about these the IMF and the World Bank. ये सब वर्ल्ड वॉर टू के बाद एस्टेब्लिश हुई है 1944 के अंदर द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो. There are about 189 member countries in it. The headquarter is in Washington, D.C. Countries like Cuba and North Korea, they're not part of this, obviously. जहां तक IMF की बात है, in a nutshell, IMF basically helps you manage your expenses and your deficit. Okay? वो अगर आप यहाँ देखें, the aim for them is to promote internationally monetary cooperation, exchange rate में stability, assist in setting up multilateral systems of payment. जैसे आपके पास ये स्विफ्ट सिस्टम है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनली पेमेंट्स कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, बैंक के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर एंड द होल वर्ल्ड इज सो डिपेंडेंट ऑन द स्विफ्ट सिस्टम, then that gave the power to the IMF and the US to basically hold Russia accountable for it in financial terms. Their payments, जो उनके oligarchs हैं, उनके पैसे फ्रीज कर देना, ये सब पॉसिबल है. पैसे ट्रांसफर करने की एबिलिटी उसको लिमिट कर देना. So now the BRICS system is actually because they've realized कि किस तरीके से we're dependent on this multilateral payment system. So they came, the BRICS have made their own system and they are making transactions. So that means that अब they're not so dependent anymore. So obviously IMF was able to do these things. Here to make resources available to member experiencing balance of payment difficulties. Now, देखो पाकिस्तान में तो तुमने सुना ही होगा कि multiple times, like over 20-25 times we've gone to IMF. IMF हमें जो है plan बताता है. Once we enter the IMF program, we know that, you know what, now we are safeguarded. That means the IMF is going to give us money. All we have to do is follow their procedures, whatever they're saying. And if we continue to do that, हमारे पास पैसे की funds available रहेंगे. ठीक है. और फिर जब इकोनॉमी को ग्रो करने में भी दे कैन बेसिकली हेल्प. आई थिंक नीचे इसका एक बेहतर डिस्कशन इन्होंने दिया हुआ है दैट जो IMF है वो तीन चीजों को मेनली देख सकता है. वन इज the surveillance, then it is the technical assistance, and then it is the lending. लैंडिंग वाला पार्ट तो हमें बड़े ही अच्छे से इन लाइन है कि उनका जो जो कंट्रीज को पैसे बोरो करने की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, तो वो इनके जब प्रोग्राम्स में होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे गेट द हेल्प. बट जो सर्वेलेंस और टेक्निकल असिस्टेंस है इसके अंदर आप ये बात कर सकते हो जैसे फिनटेक के अंदर IMF कैन हेल्प अस to establish online payment systems, that how can we basically get the taxpayers, the people जो कैश के ऊपर काम करते हैं, हम उनको किस तरह से टैक्स ब्रैकेट्स में लेकर आ सकते हैं, उनकी इनकम को किस तरह से हम लीगल बना सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में कैसे लेकर आ सकते हैं. तो दे कैन हेल्प यू विद ऑल दिस रास्ट सिस्टम, द टेक्निकल असिस्टेंस सिस्टम, एंड देन दे कैन हेल्प अस डू सर्वेलेंस कि हमारा कहाँ पे पैसा जा रहा है, इंटरनेशनली डॉलर किधर मूव कर रहा है. सो दे कैन हेल्प अस विद दैट आल्सो. Whereas the World Bank goes, देखें जी वर्ल्ड बैंक की जहां तक बात आती है, वर्ल्ड बैंक इज नॉट टू हेल्प यू विद लाइक दीज लोन्स फॉर योर एक्सपेंडिचर. वर्ल्ड बैंक का काम है आपके कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखना, क्योंकि उनका एम क्या है, लाइक आई मेंशन कि उनका तो एम ये है कि उन्होंने जो है दुनिया की पॉपुलेशन को जो है 3% से ऊपर लेके जाना है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से कम करना है, लोगों को पॉवर्टी से निकालना है. तो वो जैसे हमारे यहाँ रेड बसेस चल रही हैं वो IMF के प्रोग्राम, सॉरी, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से आया होगा. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आप करने जाते हो, कोई न्यू हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर आप करना चाहते हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोगों का हेल्थ ब्लड टेस्ट वगैरह का जो सिस्टम है वो भी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हम इस्टेब्लिश करते हैं. सो वर्ल्ड बैंक गिव्स अस टन्स ऑफ मनी.
in order to do these sort of like projects. ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये बहुत सारी एजेंसीज की इन्होंने बात की हुई है, जिसके अंदर लोन्स जो है वो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल के लिए भी हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिज्म के लिए हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर उसके बाद द लोन्स tends to be linked to conditions that involve higher reaching changes being made to the economic policies of the recipient economies. देखें जी, we've heard in the past a lot in पाकिस्तान के अंदर, unfortunately this misinformation goes. It is right and wrong in its own way, but दैट आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देना चाहता, या वर्ल्ड बैंक हमको मकरूज करना चाहता है। द थिंग इज, एक वॉशिंगटन कंसेंसस की बात है विच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, वी नीड टू गेट दीज कंट्रीज आउट ऑफ दीज लो इनकम स्टेटस एंड वी नीड देम टू इम्प्रूव फ्रॉम द प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसका तरीका क्या है कि आप प्राइवेटाइजेशन कराएं, डीरेगुलेशन कराएं, ट्रेड लिबरलाइजेशन करें, दैट मीन्स ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वगैरह को खत्म करें। तो उनका मेन फोकस इज टुवर्ड्स दीज थिंग्स, राइट। फ्री मार्केट को, लेट द फ्री मार्केट डील विद दीज थिंग्स, and hopefully the free market will increase the productive potential. That's the idea. एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ज्यादातर जब अपने पैसे देते हैं तो उनका जो टाइट एस्पेक्ट होता है वो इसी तरीके तरफ होता है कि आप जो है अपने आप को लेके जाएं टूवर्ड्स फ्रीयर मार्केट। ठीक है। लेकिन हमें पता है इन रियलिटी इसकी वजह से your countries can face a little problem, because वो आपको फिर उस तरह की पॉलिसीज में पुश कर देते हैं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, दैट मीन्स व्हाट द आइडिया ओवर हियर इज कि you're saying that the government is inefficient, that is why you want to go towards the free market concept. But remember, there is always like market failure which can come into play, and then unemployment can happen. You might not have reasonable financial markets, and there is a chance that you might get exploited out of this whole thing. ठीक है, तो obviously there are problems which needs to be addressed. ठीक है। So in our discussion over here, we made like long discussion here about किस तरीके से जो countries हैं लो, मिडिल और डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच कैन बी डिस्कस। तो ये तुम्हारे 20 मार्क ऐसे के लिए यू नीड टू नो एटलीस्ट लाइक 6 7 ऑफ दोज, एंड हाउ यू कैन एक्सप्लेन। प्लीज मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। इवन इफ दे आस्क जस्ट के लो इनकम कंट्रीज के अंदर व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, so characteristics may make sure that you still make a comparison with low income with a high income, whether they ask you or not, just make comparison, okay? Because that is needed. Okay, so that would like be your 20 mark essay. Again, like I said, these are like really, really important topics for us. Okay.